بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture 4 of unit 1, Light in the Night. Students, in the last 3 lectures we have studied and learnt about the history of street lamps in London and how the lamps were brought to London. Now lecture 4, unit 1, Light in the Night. Listen carefully. The lampposts of London were designed with a bar sticking out on either side at the top so that the lamplighter could safely rest his ladder on them. Lamplighters moved quickly, carrying their ladder and going up and down it hundreds of times a day. The lampposts were decorated with the royal crest and were looked after carefully by the lamplighters. When gas lamps started to be used from 1805 onwards, they changed the work of the lamplighters. The gas lamps were much quicker to light and didn't require lots of the work like the oil lamps, such as changing the smelly oil and replacing and trimming wicks. Some of the lamplighters felt their job wasn't the same anymore. Charles Dickens captured this feeling in the story The Lamplighters when one character talks about the change from oil to gas lamps. Now students, listen carefully and write down the meanings of difficult words. The lampposts of London were designed. लंदन के लैम्पपोस्ट बनाए गए थे विद अ बार, एक स्टिक से, स्टिकिंग आउट, जो लगे हुए थे बाहर की जानिब, ऑन ईदर साइड, दोनों तरफ, एट द टॉप, ऊपर, सो दैट द लैम्पलाइटर कुड सेफली रेस्ट हिज लैडर ऑन देम, ताकि लैम्प लाइटर आसानी से अपनी सीढ़ी उस पर लगा सके. लैम्पलाइटर्स मूव क्विकली. लैम्पलाइटर्स तेज़ी से हरकत करते, तेज़ी से अपना काम करते. कैरिंग देयर लेडर, अपने सीढ़ी को उठाए हुए. एंड गोइंग अप एंड डाउन इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स अ डे, उस पर से दिन को कई मरतबा चढ़ते और उतरते और तेज़ी से अपना काम करते. The lampposts were decorated with the royal crest. Royal means Shahi and crest means beautiful design. The lampposts were decorated with the royal crest. Lamppost सजाए गए थे, मुज़य्यन किए गए थे with the royal crest, शाही अंदाज में, and were looked after carefully by the lamp lighters. और लैम्प जलाने वाले बड़ी एहतियात से उनकी देखभाल करते, बड़ी तवज्जो के साथ उनकी देखभाल करते. When gas lamps started to be used from 1805 onwards, 1805 के बाद जब गैस लैम्प इस्तेमाल होना शुरू हुए, they changed the work of the lamp lighters, तो उन्होंने लैम्प जलाने वालों का काम तब्दील कर दिया. The gas lamps were much quicker. The gas lamps were much quicker to light. गैस लैम्प्स बहुत जल्दी से रोशन हो जाते. And didn't require lots of the work, और ज़्यादा मुशक्क़त की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती. Like the oil lamps, ऑयल लैम्प्स की तरह गैस लैम्प पर ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती. सच एज़ चेंजिंग द स्मेली ऑयल, जैसा कि बदबूदार तेल को तब्दील करना. एंड रिप्लेसिंग एंड ट्रिमिंग विक्स, और विक्स को, विक्स मीन्स धागा या रस्सी जो कैंडल में होता है. एंड रिप्लेसिंग एंड ट्रिमिंग विक्स, और विक्स को रिप्लेस करना या काटना.
Some of the lamplighters felt their job wasn't the same anymore. कुछ लैंप जलाने वालों को लगा कि उनका काम पहले जैसा नहीं रहा. Some of the lamplighters felt their job wasn't the same anymore. बाज़ लैम्पलाइटर्स ने लैम्प जलाने वालों को महसूस हुआ कि उनका काम पहले जैसा नहीं रहा. चार्ल्स डिकन्स captured this feeling in the story. Charles Dickens Charles Dickens is a writer. He captured this feeling in the story. उसने यही एहसास अपने एक स्टोरी में बयान किया है, द लैम्पलाइटर्स, जिसका नाम लैम्पलाइटर्स है. When one character talks about the change from oil to gas lamps, जिसमें एक शख्स तेल के लैंपों से गैस के लैंपों की तरफ तब्दीली के बारे में बात करता है. चार्ल्स डिकेंस कैप्चर्ड दिस फीलिंग इन द स्टोरी. चार्ल्स डिकन ने यही एहसास अपने एक स्टोरी में बयान किया है, द लैम्पलाइटर्स, इसका नाम है द लैम्पलाइटर्स. व्हेन वन कैरेक्टर टॉक्स अबाउट द चेंज फ्रॉम ऑयल टू गैस लैम्प्स, जिसमें एक शख्स गुफ्तगू करता है तेल के लैंपों से गैस के लैंपों की तरफ तब्दीली के बारे में गुफ्तगू करता है. Students, this was fourth lecture of Unit 1, Light in the Night. I hope you understand. Now, listen carefully and write down the meanings of difficult words. Sticking out. Sticking out means बाहर लगाना. Decorated means मुज़य्यन करना, आरास्ता करना. Looked after means ख्याल रखना. Trim means काटना. And captured means बयान करना. Students, this is question number 1. You have to write the meanings of these difficult words in your notebooks. Now, question number 2. Listen carefully. How did the gas lamps change the work of a lamplighter? Listen again. How did the gas lamps change the work of a lamplighter? Students, these two questions are your homework. Question number 1 is you have to write the meanings of difficult words, and question number 2 is how did the gas lamps change the work of a lamp lighter? Students, this was lecture 4 of Unit 1, Light in the Night. I hope you understand. Thanks for watching. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.